good, so keep it up. If it was not so good, which you feel, so need to work a little more. That's it. So whenever you are lacking mark, okay, do an analysis. Where did you lose mark? Are you doing that? Yes. They give you model answer. So what is the expected answer? What you have written? You can do self-analysis. That is important. कितने लोग ने मॉडल आंसर घर जाके चेक किया आंसर शीट मिलने के बाद? Yeah, so that is what is required. Don't be depressed when you're losing marks, but you should know why did you lose marks. That is very important. And next time, be careful. Do not repeat that mistake. That's the way to go. Okay, na? So everybody is learning. So we will keep improving with every exam. So are we expecting exams, Dharma and Manasvi? No. Rishant is not given a person. Why Rishant? Okay, tell me, where did we stop in the last class? We watched. We have one more student here, right? Yes, sir. She was in the waiting room. So why didn't you remind her? We were talking to you. I think the class and it vanished. So she will probably try again. So let me know when she comes. Because she's taking the waiting room. There is waiting room. There's a participant. Participant. Where is that? Beside you. No, sir. On the logo. No, we don't have. So it's all three only. No? 3 is showing here. If it was waiting, do we have a different icon for waiting? No, sir. We get exact report. Now tell me, where did we stop in the last class? Sir, we were barely given operators 4th question. Page number 51. Page 51. So feel free to discuss any concerns because we have done quite a few chapters now. Now you know. So now different publication book is also not a concern, right? This is better, right? Sir, for the second chapter, what are the main points to be remembered for the 20 marks? Main point is everything whatever I have taught you. I mean, there's nothing like which is not pain. Otherwise, why would it be taught to you? Yeah, 51 question 4. Till 5 we have done or we have to do? 4 we have to do. 4 वो तो फोर्थ में चेंज करवाया है बट सॉल्व किया था कि नहीं लेट्स डू 4 हैव यू डन 4 ओके सो 4 हो गया तो क्वेश्चन मेरे सारा नहीं हुआ 3 पार्ट है उसका हां 1-2 पार्ट हो गए विवाशो तुम्हारे कुछ एग्जाम्स हुए क्या सर अभी तक तो नहीं स्कूल में यूटी का एग्जाम लिख रहे हो तुम हाँ सर यूटी के टेस्ट दे रहा हूँ अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है सर अच्छा है टेस्ट इजी लग रहा है अभी थोड़ा ओके ऑलराइट सो क्वेश्चन 4 विवाशो कितना तक किया था हमने सर एक सेकंड पूरा कंप्लीट किया वो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी तो पहले तो लिख लो गिवन डेटा क्या क्या है फोर्स एक्सपोर्ट गिवन t is equal to 10 सेकंड u is equal to 0 क्योंकि स्टेशनरी है m is equal to 100 kg ठीक है so the body moves through a distance of s is equal to कितना मूव कर रहा है 100 मीटर तो ये t1 ले लो ये ले लो t2 5 सेकंड क्या बोल रहा है ये देखो अपने पास एक बॉडी है which is of 100 kg इनिशियली वो रेस्ट पे था ठीक है इनिशियली वो रेस्ट पे था बाद में इस पे
फोर्स लगाया, कितनी देर के लिए फोर्स लगाया? T1 10 सेकंड, 10 सेकंड का फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली इट विल एक्सीलरेट। 10 सेकंड के बाद में इट विल हैव सम वेलोसिटी, ओके, ये वेलोसिटी आ जाएगा v आफ्टर 10 सेकंड, फोर्स यहां तक लग रहा है। अब 10 सेकंड के बाद में क्या हो रहा है? इट इज मूविंग फॉर अनदर 5 सेकंड्स। ये जो T2 है 5 सेकंड्स के लिए मूव कर, जो भी वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, it is moving with that velocity because now no force is acting. By Newton's first law, when force is zero, v is equal to u. मतलब जो भी velocity है यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा उससे, ठीक है? फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन हमको जीरो मान के चल, तो ये v से ही चलेगा। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ पे? 100 मीटर कवर किया। इन्हें समझ में आ गया? चलो, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड, मतलब ये निकालना। तो क्या होगा? v u, ठीक है? F दिया क्या? नहीं दिया, P दिया होगा। Solution V is equal to U plus AT. Acceleration दिया है? U plus AT square. एक मिनट, तो आपको V ऐसे नहीं निकालना है, V हमारा क्या आ जाएगा? किस डेटा से निकलेगा? इससे। V किससे निकलेगा? इससे, क्योंकि ये V से ही चलेगा ना, 100 मीटर तक V से चलेगा, तो V is equal to distance upon T2, किससे निकलेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको मार्क करो। ये फर्स्ट पार्ट, तो दिस इज 100 मीटर divided by T2, मतलब कि 5 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? और जब एग्जिस्ट करना बंद कर देगा आफ्टर 10 सेकंड, तो ये बी से ही चलेगा आगे, और उससे क्या बोला है? नेक्स्ट 5 सेकंड में यही सेम स्पीड से कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस? 100 मीटर। ये यहाँ से निकल गई, ठीक? ओके, ग्रेट। देन सेकंड, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। नहीं, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। सो A is equal to V minus U by T। T1 पकड़ना पड़ेगा। फोर्स कहां तक लग रहा है? 10 सेकंड तक लग रहा है, तो एक्सीलरेशन यहां पे ही होगा, ओनली हियर। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बॉडी विल एक्सेलरेट, इसलिए तो U से V हो गया। कितने ड्यूरेशन में? 10 सेकंड। 10 सेकंड जहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स खाली 10 सेकंड के लिए लग रहा है ना, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा। स्टेशनरी से V पे आ गया, और फिर V से ही चलेगा 5 सेकंड। So A is equal to V minus U। V कितना निकाला हमने? 20। U कितना था? 0। फिर कितना था? 10। ये हो गया स्क्वायर। मीटर पर सेकंड क्या है? वेलोसिटी की यूनिट। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये सिनेरियो समझो पहले, और फिर तुम वो सॉल्व करते जाओ। थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? बाय न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स तो जहां पे लग रहा है वहां एक्सीलरेशन भी आएगी। मास कितना है? 100 kg। फोर्स हो गया 200 kg। चलो अब तुम लोग बारी बारी से मुझे एक्सप्लेन करोगे कैसे क्या चीज निकाली। क्या हो गया? इसकी टूटी हुई है, कहाँ डाल दिया था तुमने?
Fast is the faster will get the. So you have to be very careful. मतलब ये सब I don't want to discourage for playing sports, but you be careful with precautions. Writing hand ये ना वो. You understood how we did? Feel free to ask wherever you are having difficulty. So we'll do the next question. Have you understood all the steps? Can you explain how we calculated velocity? Yes. What do? Distance upon time. So, why we have used this data? यहाँ के data से B नहीं निकाल सकते. Because we also needed A, which was not. You should think, मतलब sometimes the data is not given in a straight way. अब ये बोल रहे हैं, it covers 100 meter in the next 5 seconds. मतलब ये कुछ velocity से चल रहा है. अब force तो लग नहीं रहा. यहाँ पे कौन सा law लगा? Newton's first law. वो uniform velocity से ही चलेगा throughout. लेकिन अब इसमें acceleration क्या है? Zero. यहाँ पे acceleration क्या है? Zero. Because force is zero now. ठीक है? तो V काम पे unaccelerated situation में ये formula use होता है velocity. Distance traveled per minute time. समझा? नहीं समझा? तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो. अगर तुम्हें कहीं पे कंफ्यूजन है तो फिर तुम्हें फ्लैश हो जाएगा कि हाँ ये डेटा यूज करो. फिर एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी खाली यहाँ पे लग रहा है फर्स्ट 10 सेकंड्स में. वेलोसिटी इज चेंजिंग ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड्स. कब चेंज हो रहा है? जब फोर्स लग रहा है. तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 से कितना हो गया? 20 ये हमने देखा. ठीक है, ये आ गया 2. उसके बाद फोर्स निकालते हैं. मास इनटू एक्स. मास दिया हुआ है 100 के. ठीक है, एक्सीलरेशन हमने पहले निकाला. मास इनटू एक्सीलरेशन इज फोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Average force applied by the player. So force का क्या फॉर्मूला होता है? F is equal to ma. और a क्या होता है? Acceleration. B minus u by a. क्या निकालना है आपको? So what is the mass given? 100 gram मतलब 0.1 kg. Brought to rest मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 minus 30 Yes. by 0.00. Divided by 0.03. 0.03. ये सर हम लोगों ने 0.1 की कोशिश क्यों लेनी है? डिवीजन में 0.1 की डिवीजन में b minus इक्वल है ना. हाँ तो उसमें हम लोगों ने m को भी क्यों डिवाइड किया? b से? कहाँ है हमको डिवाइड किया? ये क्या है? नीचे ई है ना. तो कहाँ है हमको डिवाइड किया? ये तो वेलोसिटी है. इसका कॉमन यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड. ब्रैकेट में क्या है? वेलोसिटी. इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. ये क्या है? मास केजी. और टाइम का क्या है? सेकंड. और सॉल्व करो. क्या है? ये हो गया. ऊपर जाएगा तो ये पहले हो गया माइनस 30 into 100 divided by 3. ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो सब यूनिट का कैलकुलेशन करोगे. सेकंड ऊपर जाएगा -100 हो रहा है. हाँ -100 नहीं. सर तो क्या ही होगा?
3 और 30 को रिड्यूस करते हैं ना, 10 और पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो फिर 100 आ रहे तो -100 हो जाएगा। बराबर। तो ये हो गया 3/3 which is -100 -100 के ऊपर -100 kg/s which is ठीक है देखो हाँ पॉजिटिव और ड्रेन by the player क्योंकि प्लेयर जो फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन तो आप आगे लिखोगे therefore force applied to the player is equal to is 100 Newton in the direction ऑपोजिट of the motion of force. ठीक है इसके लिए मोशन ऑफ द बॉल के रेस्पेक्ट में ये ऑपोजिट में लगा तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पकड़ो क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है रिगार्डिंग फोर्स लिखेंगे वो भी नेगेटिव में आएगा आंसर लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो लिखेंगे therefore रिगार्डिंग फोर्स में फिर माइनस के साथ नहीं लिखेंगे डायरेक्टली लिखेंगे फोर्स माइनस मतलब रिगार्डिंग फोर्स प्लस क्वेश्चन 6 में क्या क्या गिवन है तो हमारे को पहले सिनेरियो हमारे पास एक बुलेट है तो जाके वुडन ब्लॉक पे घुस जाओ वुडन ब्लॉक में कितना दूर चलने के बाद रुक जाता है कितना चलने के बाद रुक जाता है तो एस कितना है एस इज 2 सेंटीमीटर which is 0.02 मीटर ठीक है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बुलेट का 0 इनिशियल वेलोसिटी कितना है बुलेट का 100 मीटर पर सेकंड ठीक है ना सर ये बुलेट कैसे चल रहा है और जब बुलेट जब फायर होने से पहले जब रहता है वो रेस्ट पे रहता है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वुड के वुड में जब घुसना चालू किया तो वेलोसिटी क्या था 100 वुड में घुसने के बाद 2 सेंटीमीटर चलने के बाद 0 हो गया तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ठीक है तो अभी क्या हो रहा है मास कितने बुलेट का 50 ग्राम है तो 0.05 kg वेट है तो फर्स्ट केस में क्या निकालना है हमको पी इनिशियल कितना हो गया एम यू जीरो एक मिनट 0 नहीं वो 100 है सब यू इज 100 ठीक है फाइनल वेलोसिटी तो कितना हो गया ये 5 kg मीटर पर व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम
Initially bullet was moving. वो जो तुम बोल रहे थे मैंने वो घुस गया. U is not zero here. U with respect to wood पहले चल रहा था. wood में जाने के बाद zero. ठीक है? ये हो गया. So the context you have to be very careful about. The final momentum zero होगा इस केस. ये होगा 0.05 kg. ये 0. Final momentum will be 0 क्योंकि वो बुलेट रुक गया ना वुडन ब्लॉक. ये तुम्हारा वुडन ब्लॉक. Then retardation caused by wooden block. So retardation भी तो. What is retardation? Opposite है हो सकता है ना opposite है. अभी ये क्या बोल रहा है? Acceleration. Retardation caused by wooden block. The rate of decreasing of velocity. हाँ. ये यूनिट गलत दिया है क्वेश्चन को. मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए. Retardation is also acceleration in the opposite direction. ठीक है? ये क्या होगा? ये निकालना है. हाँ वो गलत है. तो v minus u by t निकाल पाओगे क्या यहाँ पे? t दिया है? नहीं दिया. क्या दिया है? s दिया है. तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला. एक्सेलरेशन में जब टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे. थर्ड इक्वेशन नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन से v minus u by. ठीक है? दो तरह से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. ये कितना हो गया? v हमारा है 0, u हमारा था 100, 2 s कितना था हमारा 0.02. ठीक है? 100 क्या हो जाएगा? ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. ये इसका स्क्वायर यूनिट के साथ और 2 into मीटर. तो अब यहाँ क्या बचेगा? -100 into 100 पॉजिटिव. ठीक है? क्या हो जाएगा अभी? मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04 मीटर. ठीक है? तो 1 मीटर इससे स्क्वायर से कट जाएगा तो तुमको एक्सीलरेशन की यूनिट मिलेगी. ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. तो ये कितना आ गया? ये हो जाएगा 25 into 10 into 5. हाँ 25 नहीं 25 to 10 raised to 4 आएगा. 0.5 to 10 raised to 5 आएगा. ये आएगा 100 by 4 25 होगा. लेकिन 25 to 10 raised to 4 आएगा. 2.5 to 10 raised to 5 आएगा. हम जब आंसर को एक्सप्रेस करते हैं एक डिजिट के पास में डेसिमल लगा तो फिर उसके लिए हमको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन. तो ये क्या है? नेगेटिव है. एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है. तो रिटार्डेशन कितना हुआ? पॉजिटिव. यस. Acceleration is negative. That means what is retardation? Positive. Again, it is just the way you write your answer. That's it. Retardation is negative acceleration. So answer क्या लिखोगे? Therefore, retardation is retardation is equal to 0.5
आंसर ये नहीं है, नेक्स्ट वन आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन के लिए तुमको कैलकुलेशन ही निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कब रिटार्डेशन पूछा तो एक्सीलरेशन निकालोगे, रिटार्डिंग फोर्स पूछा है तब फोर्स निकालोगे। उस केस में फोर्स अगर नेगेटिव आएगा, ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है ना, तो रिटार्डिंग फोर्स है। समझ में आया? फोर्स के लिए रिटार्डिंग फोर्स क्लियरली दिया होगा क्वेश्चन, और सिर्फ रिटार्डेशन है तो एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई? फोर्थ पार्ट, what is the fourth part of this question? यहाँ भी कर लेते हैं। What is the fourth part of the question? Resistive force exerted by the wooden block. So F is equal to resistive force is also retarding force. ठीक है? तो ये क्या होगा? M into A. What is the mass of bullet? 500 newtons. Then A is 2.5 into 10 raised to 5. ये न्यूटन हो गया। ठीक है, ये क्या था? माइनस Minus 12,000. कब जाके नहीं, फोर्स इज नेगेटिव, therefore resistive force is positive. Yes. So how much is this? ये इसके 2 0 कट जाएंगे, तो ये होगा माइनस 2.5 minus 5 into 2.5. And how much is this? 125 into 10 raised to 3. 10 raised to 3 करोगे तो माइनस 12500 है। ठीक है, therefore resistive force कितना हो गया? Force is this, therefore resistive force. Resistive force is always in the opposite direction. Wherever you have friction, retardation, resistive force, वो सब नेगेटिव होता है। कैलकुलेशन में नेगेटिव आएगा, तो आंसर लिखते गए तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। So the negative sign only represents tension, nothing else in the vector quantity. ठीक है? Question 7. Question 7. A car is moving with uniform velocity. So 6 was a big question, huh? 4 sub questions again. So वैसे ही इसमें भी 3 part है. So car is moving with a uniform velocity 30 meter per second. So what is the initial velocity of the car here? 30 meters. 30 meter per second. So U is 30 meter. What else is given? It is stopped in 2 seconds. मतलब कि V कितना हो गया? 0 meter per second. F is equal to कितने टाइम में स्टॉप हुआ? 2 seconds. 2 seconds. F is equal to So now F is equal to what? 1500 newtons. So F is positive or negative? Positive. Negative. Correct. अभी समझा? ये रेजिस्टिव फोर्स है। तो अभी क्या निकालना है? तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। What is the change in momentum of the car?
Solution. Since F is equal to rate of change of momentum. So this is the time duration. So T or delta T is one and the same thing. In 2 seconds. So it is a time interval. Yeah? So therefore, delta P is equal to F delta T. So what is F delta T? F is 1500 minus 1500. And delta T is 2. So minus 3000 AC meter per second. Sir, can you please again tell me what is delta K delta T? Delta P is changing momentum. MV minus MU. Then 95% Q. ये न्यूटन सेकंड लॉ है ना ठीक है. And delta T. टाइम इंटरवल कितने टाइम में चेंज हो रहा है मोमेंटम 2 सेकंड में सो टी और डेल्टा टी इज द सेम थिंग टी इज ऑलवेज टाइम इंटरवल सी 0 to 2 सेकंड ना 2 सेकंड minus 0 is how much डेल्टा टी इनिशियल टाइम इज ऑलवेज 0 Yes. वहां से 2 सेकंड तो टाइम इंटरवल इज 2 minus 0 is that clear? Yes, sir. So therefore, change in momentum will be also in opposite direction. Force always act in the direction of changing momentum, right? So therefore, change in momentum. क्योंकि रुक रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा. Yes. Retardation produced in the car. So how will you calculate retardation? This was first part. Second part. So, A निकालना पड़ेगा ना रिटार्डेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन B minus U by T. So B तुम्हारा कितना है 0 minus 30 by 2. How much is this minus 3 meters per second square. Retardation. No, this is acceleration. Therefore, retardation is 55. Retardation is 15 meters per second square. ठीक है. Are you comfortable in dealing with negative and positive? ठीक है ना? Head blowing off. No? That is taking. It's a good thing, you know. Head is aching. It gives us the knowledge that we have a head. Head is aching is a good news. We come to know that we have a head. If it is not aching, then problem. Is congratulating you. At least you have a head. Don't suffer about me. Okay. So I joke in between. Huh? Don't take it too seriously. Okay. Come back. Question 3. What is question 3? Mass of the car. So since F is equal to MA, therefore M is equal to F upon A. So what is it? F is minus 1500.
And K is minus 15. How much is this? 30. Wonderful. Which car is this? Is it a toy? Do you have any idea what the mass of the car? Definitely the one that we drive. Minimum 2000 kg. Minimum. Tons. 10, 20 tons. 2 tons. 10, 20 tons. One truck and I'm not talking about 20 tons. Car. 2000 kg minimum. 3 tons. Yeah, 2 to 3 tons. So how did we calculate it? F negative and A also negative. So in calculation, we have to substitute with the sign. And don't do mistake. ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ पे भी negative आएगा. So hope so have you understood ना? ये वही है F equal to MA है but written differently. Agree with me? All of you. So in this question, mark this question, they have asked you to calculate the change in momentum. That also you can calculate only by the force formula. Second law, by second law, right now. So I will the second law. Okay, right, the approximate weight of the body of mass by 2. Are we done? Done. So what is the weight formula? Weight is mg. Okay, so for 5 kg, and g, let us take meter per second square. So it is 50. That is 50 Newton. So for a 5 kg mass, what will be its weight? Weight is the gravitational force. Since weight is equal to gravitational force. So Sir, that I what can't is that? see. You can't see. No, sir. Can you see now? Yes, sir. So weight is equal to gravitational force on the body. So what is the gravitational force? F towards our acceleration is small v. What is the assumption we made here? We took the value of acceleration as 10. Assumption. Generally, what is G? 9.8. Or we got approximate 50 Newton by taking value of G as 10. That's the question. State the magnitude and direction of the force of gravity acting on the body of mass 5 kg. Take G is equal to 9.8. Same thing, but now with G is equal to 9.8. How much is this? 90. How much will it be? 540. 49 kgs. This will be now 49 Newton. Downwards.
Because in this question, both the magnitude and director is asked. Who is more stronger, you or her? Arm wrestling or arm twisting? What's going on? Arm twisting. Who is more strong, you or him? Not right. You never know, like he looks very, that way. This chapter is about force and all that, na? So make a weird idea. Okay. Shall we discuss question 10? Question 10. Are we good till question 9? Are you having fun? Yes, sir. Compare it with your experience of the first chapter. Yes. Very cool. Huh? 100% better. So the ride is smooth now. I told you, first chapter was science. Interesting तरीके से? No, ये interesting नहीं है. क्या चीज समझ से बाहर? अरे समझ से बाहर है कुछ नहीं है क्या करें बोला No, seriously, अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है तो फिर कोई गड़बड़ है. चलो, now you will do question 10 yourself. Let's see how many of you are able to do. Question 10, you have to do yourself. All good, Vilmashwan? Yes, sir. So try question 10. Pound. What is the mass? 10 kg. Okay. What is the weight on the moon? How? Show me the steps. इसको आंसर देख के लिख दिया. अब बताओ मास कैसे है? क्वेश्चन में क्या दिया है? The weight is given 98 Newton. Weight क्या होता है? mg. Therefore m क्या हो गया? F by g. मास कितना आएगा? What is the weight given to you? 98 Newton is given to you. This you have to take as 9.8 meters per second. square. तो ऊपर क्या बचेगा? kg. 10 बचेगा सर. Newton is kg meter per second square. न्यूटन क्या है? kg मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा. Hand shaking going on for what? We both got right answer. Yes. That's why. Okay. Certainly not twisting. You guys are well. That's it. Okay. You can't celebrate success together. Learn few things from boys, how they, appreciate and buckle up each other. Yeah, they're buckling up each other. Okay. Second part. Second part में क्या करना है? Now you have to find the weight. Multiply करना है. So this is the weight on Earth. Yes sir. On Earth. Now on Moon. Now weight on Moon is
is equal to, will the mass change on moon? Will the mass change on moon? No. He said yes. Like this. What does it mean? Yes. Will the mass change on moon? No. No. Mass is constant throughout the universe. क्या change हो रहा है? So what do you have to find now? Mass is 10 kg. We found that the gravity on moon given is 1.6. So this is what 16 kg meter per second square or yes. But you have to also explain, like mass will not change, so mass remains m only. What is changing is weight and gravity. Right? How did the weight change? Because of change of gravity. The acceleration due to gravity is changing at every place. Sometimes we say gravity is changing, sometimes we say acceleration due to gravity is changing. Both are correct. Because gravity is changing, that's the acceleration. Gravity is force. अलग अलग force हो जाता है. समझ आया? Force अलग अलग हो जाता है. इसके लिए तो gravity भी अलग अलग होती है. The sickness. Your body parts are not in your control. Without force, it's just waving like this. Not in your control. Okay. Question number 11. Question 11. This is spreading very fast. वहां से यहाँ. Question 11. See if you can do it. Question 11. देखिए ना, क्या है क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Force, gravitational force ही तो weight है. Both answer will be Yes. same. ठीक है, देखो आंसर. Yes, sir. Since gravitational force itself is the weight, therefore दोनों आंसर same है. F is equal to mc in both cases. हमारे पास 100 ग्राम ज्यादा है. इसकी खुशी खुशी वही प्रूव कर रहे हो तुम लोगों तब से. मेरे पास ज्यादा नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं, मेरे पास ज्यादा. वही चल रहा है ना तुम्हारा. Huh? You think from words about that. Good job. Okay, next question. 11th is done. I'm not doing 11. 11 gravitational force and weight is same thing. समझ आ गया? अभी weight में कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए? Weight और mass में कंफ्यूज हो गया अभी? नहीं. दोनों सेम है कि अलग है? अलग है. Mass mass और weight weight. Gravitation, mass delta पहले आपको और gravitation. Very good. This is the best class I've ever met. Thank you, sir. सेवा करा. Okay, with this we reach question 12. Let's do question 12. Appreciating. Now let's see who does this question. So far, all the motion that we studied was horizontal. This is now becoming a vertical motion. So what is the scenario here? A ball is thrown upwards. Only ball. Ball is thrown vertically upwards. It goes to a height of what height it goes to? 20 meters.
Okay, so it goes up to 20 meters. The initial velocity of ball would be zero, right? If the initial velocity of the ball is zero, will the ball move? You have to move the ball, huh? Basically, when you throw, when you give a jerk or project it, तो बगैर velocity के बॉल ऊपर जाएगा कैसे? Yes, the ball is at rest. But now when you set it in motion, you have to give it some initial velocity, na? Yes. So what is the initial velocity that we have to find out? And then returns to the ground. So it has got both the motions. Okay. So what do we know here? We know here at the top. So we don't know what is this. Okay. And this is V equal to 0 for upward motion. Right? And what is it? V has to be taken as 10 meter per second. Sorry. This is the given data. Is the question understood? So first part we have to find the initial velocity A. So during upward motion. What can we write? Which equation? Time is not given, height is given. So which equation? Third equation. So B square minus U square upon 2S. S becomes H. Vertical. So what is B now? At top position, what is the velocity? 0. Only when the velocity becomes 0, then it begins to fall down. Yes. So during upward motion, okay. So what do we have? And G will be negative. When you're going up, what will be the sign of G? While going up, G has to be taken negative. Retard करेगा ना तभी तो V 0 है. Final velocity 0. Means G is acting as retardation. So that's why minus. So this is equal to minus 20 into 20. Minus cancel. What is U there? This is U. Okay, now the initial velocity of the ball is 20 meters per second. Q minus the angle, दोनों side minus है. Now, what is the B part? What do we have to calculate in part B? We have to calculate the final velocity of ball on reaching the ground. Now look here, so It would be the same, right? yeah, the same velocity with which it was projected. But how? You can calculate during downward motion. ठीक है? So U is equal to 0 and B is equal to 1. It is downward motion. Downward motion में at the top
Initial is velocity equal to u, u is equal to v. उल्टा हो जाएगा. Yes. Downward motion. V1 is equal to u2. One is equal to v1. ये है upward motion. तुम चाहे तो U1 V1 लेके कर सकते हो और U2 V2 लेके कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. So during downward motion, अब क्या होगा? E is equal to टाइम तो है नहीं. So again, V square minus U square is equal to G H. Downward में G को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? Positive, positive. Motion and G both are in same direction. V square minus 0. ये क्या हो गया? 20 into 20. ये क्या हो गया? 48 square root है. Square root है. ठीक है? Total time of the journey will calculate in the next class. So just remind me, see the lens. See boundary. You can also try as homework. Take this as homework. Are you listening? That's homework. Write it.